तो ये हो गए एक्सपीरियंस लोगों की बातें. हाँ. But हाँ. I have done some treks, but now I want to do something on my own. How do I prepare? थोड़ा बहुत मेंटल प्रिपरेशन का फिर फिजिकल फिटनेस से कर सकते हैं लिंक अपन कि यू ट्रेन फॉर योर स्टेमिना. So we used to pick up a easy hike like something like Rajmachi, something like नानी घाट, and then used to carry loads. So वो टाइम पे ऐसे था ना कि जैसे अगर हम लोग कोई डिफिकल्ट हाइक भी कर रहे हैं तो वो जो बंदा माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन के लिए जाने वाला है ना, वो पूरी टीम का पानी कैरी करेगा. Sometimes the goal comes from my group. You know, this time, last time we did a 5,200 meters. Let's do a 5,500 meters this time. You know, not thinking about it, doing things right, and waiting कि वो next दिन ठीक हो जाएगा is the right way to go. In any trek, first 2 days of the trek, no matter what height it is, it's always been the most difficult part. कालिंदी खाल है, कब से करना है, उसकी अलग प्रिपरेशन होती है पूरी की पूरी. Because उसमें there are regions where you get avalanches, so you have to go with a satellite phone compulsory कर दिया है, उसका प्रिपरेशन और प्लानिंग पूरी अलग होगी. वो तो होता ही होता है, बट उसके बावजूद भी sometimes you know your friends in and out and you know कब वो मतलब कब उसकी लाइन है. इनफैक्ट एक पर्सन का अगर आपको कैरेक्टर समझना है ना, आप उसको हिमालय में बराबर से जज कर सकते हो. उसको अच्छे से 4-5 दिन के हिमालयन हाई ट्रैक के लिए लेके जाओ, हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक के लिए, and you will be able to judge a person. And individual calls भी बहुत लिए हैं हमने, मतलब अलग situations में अलग calls. And sometimes even when you are like the strongest in your group, you know, I know of this friend who's done his advance and everything, but in the Charangati trek he got AMS issues. Have you ever faced any difficulties on the trek? Lot of times. How difficult it is to return back? So after a lot of discussion, finally we are reaching to our next point. You have mental and physical fitness. तीसरा कोई होगा तो प्लीज मुझे बता देना. मुझे तो ये दो ही चीजों के बारे में मालूम है जो मैं करता हूँ. तो उसके बारे में हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फिजिकली एंड मेंटली whenever you are going for a high altitude? Mentally is the preparation happens because we've already gone through the itinerary, the thing in my mind while I've done the planning. So I also keep updating the group about it. You know, this is how it is going to be. Expect this. And mostly in my treks, my friends, I mean the teammates are those with whom I've hiked before. So they know what we are getting into. So that's why mental preparation is more along the way as the planning happens. You know, anyway, it's always like, you know, sometimes the goal comes from my group. You know, this time, last time we did a 5,200 meters. Let's do a 5,500 meters this time. So they're already looking forward to it. So mentally they are strong and they are prepared for it. Of course, during the trek, sometimes cases happen that, you know, the whole mental preparation goes for a toss because of some small things. But then most of my friends have always, the teammates have always been, you know, the people whom I have trekked with. So they are mentally, like they've done their courses, they've been on high altitude hikes with me, difficult ones. So they are pretty much as mentally prepared as I am. तो ये हो गए एक्सपीरियंस लोगों की बातें. हाँ. बट पर्सनली लाइक फॉर एग्जांपल अ न्यू गाय, हाँ, ठीक है, जिसने थोड़े बहुत ट्रेक्स किए हैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, बट नाउ ही वांट्स टू ट्राई समथिंग न्यू. लेट्स से फॉर एग्जांपल myself. I have done some treks, but now I want to do something on my own. How do I prepare for it? So basically, पहले तो I wouldn't directly recommend a high altitude directly for a new beginner, as in who's not done anything in Himalayas. I mean Himalayas. हाँ, हिमालयस की बात कर रहा हूँ. मैं थोड़े बहुत ट्रेक्स मैंने कर लिए हिमालयस में. अच्छा. जो हाँ, okay. Now you are looking for an high altitude experience in Himalayas. On my own now. I'm not like I'm done with the commercial groups. Now I want to do it on my own. Okay. तो फिर क्या प्लान करना है? नहीं, but if you've done it with so the major, okay, I'll say other way around. The major challenges that we see in a Himalayan trek are the weather. Weather changes very fast. वो बोलते हैं ना, मुंबई का फैशन और पहाड़ों का मौसम कभी भी बदल जाता है. So that's very true. It changes very fast. So if you have done a few treks, you would know that how difficult the weather can get or be. So the main mental preparation comes from your weather preparation. If you have enough
kind of layering of clothes, enough. If you've seen those kind of things, you've heard those kind of things, you will be a little mentally prepared about it. So वो तो मेंटल चैलेंज में एक वो आता है, एक ऑल्टीट्यूड आता है. ऑल्टीट्यूड भी अगर आपने पहले किसी ग्रुप के साथ किया है तो विल ऑलवेज बी अ लिटिल, यू नो हाउ ब्रीदिंग चेंजेस विद ऑल्टीट्यूड्स, राइट? हाउ टायरिंग इट बिकम्स व्हेन यू गो फ्रॉम अ 2000 टू 3000 टू अ 4000 मीटर टू अ 5000 मीटर. लाइक यू नो, टिपिकली अगर हम बोलते हैं, जब हम ट्रैक का डिस्टेंस भी जब कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आप 2000 से 3000 मीटर पे जा रहे हो तो आपकी एक पर्टिकुलर स्पीड रहेगी 2 से 2.5 किलोमीटर एक घंटे में. अगर आप यही चीज 4000 5000 के ऊपर कर रहे हो तो आपकी वही स्पीड 1 किलोमीटर पर प्रति घंटा हो जाएगी. या और ही ज्यादा एक्सपीडिशन पीक कर रहे हो तो कभी कभी वो आधा किलोमीटर ही होता है एक घंटे में. सो दोज थिंग्स कीप चेंजिंग, यू नो. सो ये तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अगर आपने किसी के साथ पहले किया है तो वो सेम ही रहता है. थोड़ा बहुत मेंटल प्रिपरेशन का फिर फिजिकल फिटनेस से कर सकते हैं लिंक अपन, कि यू ट्रेन फॉर योर स्टैमिना, क्योंकि यू नो द डिफिकल्टी इज वॉकिंग, ब्रीदिंग एट अ पर्टिकुलर. सो आप थोड़ा सा योगा कर लो पहले, आने से पहले 1-2 महीना पहले थोड़ी रनिंग कर लो, थोड़ा योगा कर लो. तो दैट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर मेंटली ऑल्सो व्हाइल इट्स डूइंग फिजिकली. तो आप क्या क्या करते हो? So usually before any big expedition, earlier I used to do running. Now I do brisk walking because of my knees. I don't run anymore, but I do brisk walking. And since I have a lot of trips any which ways, तो मेरा थोड़ा बहुत preparation चलता रहता है. So like in May, June, I touched 3000 meters. I did some high altitude treks in Alps. 6 घंटा 7 घंटा एक दिन में 1000 मीटर. So those kind of things I just did. So again 1 महीना ब्रेक लेके वापस वही करने वाली हूँ. So I don't do एकदम ऐसे, unless like you know if I'm doing something extreme and I'm doing it after like 6 months or 7 months, then I prepare physically also. But otherwise वो normal preparation में थोड़ा खींच लेती हूँ मैं. Yeah, if you are continuously into the events, then definitely but वो fitness आ ही जाता है. but अगर नहीं है then running is the best. Running, walking stairs. For our mountaineering courses, we used to also do load ferries. So we used to pick up a easy hike, like something like Rajmachi, something like Naneghat, and then used to carry loads. तो वो टाइम पे ऐसे था ना कि जैसे अगर हम लोग कोई डिफिकल्ट हाइक भी कर रहे हैं तो वो जो बंदा माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन के लिए जाने वाला है ना, वो पूरी टीम का पानी कैरी करेगा. So by default he has to carry 12 to 15 kgs of weight just because he is training. So we do that. So depending on your expeditions, it will be either a running, either a load ferry trip. तो लोड फेरी आप बोल रहे हो तो उसमें कितना वेट एडवाइजेबल है? So I carried before my basic trip 15 kgs for load ferry. 15 kgs. Yeah. But different treks, different people carry different weights. Like Pin Parvati, we were doing it without guide porter. We were carrying 20 kgs each. 20-22 kgs. It went down to 15-16 kgs by the end of the trip when the food was over. So, but that time thankfully I had just done my advance, so I was already well versed with the amount of weight that I could carry. But yeah, load ferry can depend on, like advance में जा रहे हो तो आप थोड़ा और ज्यादा लोड उठाओगे, basic में जा रहे हो तो आप थोड़ा कम. Again, which institute you are going? HMI में तो I'm talking about a trek. हाँ, so for trek also load ferry, if you like Panpatyakul or like Pin Parvati Pass, it's a 9-day thing. You're carrying your own weight. Minimum weight तो अपना बैग का रहता ही है, 10-12 किलो तो रहता ही है. प्लस अगर आप इमरजेंसी राशन रख रहे हो, अगर कुछ ट्रेक्स में आपका खुद का गियर रहता है, अगर आप पीक कर रहे हो तो आपका बूट्स रहेंगे जो अलग रहेंगे. इट्स नॉट हाइकिंग शूज. सो बहुत सारा और गियर आता है, क्रैम्पॉन्स आता है. तो आप कौन से ट्रैक पे जा रहे हो उसके हिसाब से आप लोड फेरी कर सकते हो. आपको 10 किलो की लोड फेरी करनी है कि आपको 15 किलो की लोड फेरी करनी है, उससे ज्यादा की करनी है. सो बिफोर गोइंग ऑन अ ट्रैक 2-3 महीने से पहले से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका वेट कितना होने वाला है, आपको क्या क्या लगने वाला है, आपका गियर क्या होने वाला है. सो वन थिंग दैट आई मिस्ड इन द अदर पॉइंट व्हाइल प्लानिंग इज द ट्रैक गियर. What is the common equipment that we carry? What is the things that we have to rent? What is the things that each of us have to carry on their own? So those kind of things also get included in the planning phase. जब भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया मैंने, रनिंग कर लिया,
और साथ में मैंने थोड़ा लोड फेरी भी कर लिया. हाँ. Okay. So by the way, for your convenience, load ferry means basically we are referring to planning some small hikes, a day hikes, carrying a good amount of weight on our backs, so that when we are actually going on the trek, we don't find that difficult. So वो हमने कर लिया, ठीक है. But उसके बाद भी एक्चुअल ट्रैक तो अलग होता है, जो हमने प्रैक्टिस कर ली. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, तो फिर वहां जाने के बाद भी कभी ऐसा डिफिकल्टीज आ सकती है ना कि सो इन एनी ट्रैक फर्स्ट 2 days ऑफ द ट्रैक, नो मैटर व्हाट हाइट इट इज, इट्स ऑलवेज बीन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. सो आपकी बॉडी को वो ऑल्टीट्यूड को यूज टू होने में भी 1-2 दिन जाते हैं. ऑल यू नीड इज पेशेंस एंड गुड विल पावर. आई नो ऑफ फ्रेंड्स, आई विल नॉट टेक नेम्स हियर, बट हु डोंट हैव गुड विल पावर. थोड़ी सी वोमिटिंग हो गई, थोड़ा सा सर में दर्द हो गया, सर में दर्द होगा, हर किसी को होता है. एक्लिमेटाइजेशन, दो यू ट्राई टू डू योर बेस्ट, बट समटाइम्स इट सो हैपेंस कि आपको होगा थोड़ा सर में दर्द. सो यू नो, नॉट थिंकिंग अबाउट इट, डूइंग थिंग्स राइट एंड वेटिंग कि वो नेक्स्ट दिन ठीक हो जाएगा इज द राइट वे टू गो. तो जैसे हम लोग ट्राई तो सब करते हैं. आपको खाना है, अगर आपको सर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना बंद कर दो, पानी बंद कर दो. आपको खाना है, पानी पीना है. अगर आपने दिन में एक अमाउंट ऑफ मीटर्स क्रॉस किया है, कि जैसे नो रिकमेंडेड है कि 300 मीटर करना है या 400 मीटर करना है, बट आपने उससे ज्यादा किया है, सो देन यू डोंट हैव टू गो एंड स्लीप इन द टेंट. आपको इमीडिएटली थोड़ा रेस्ट कीजिए, बैठिए बाहर, सांस लीजिए. 1-आधे घंटे बाद आप एक वॉक पे जाइए. आपको और 100-200 मीटर और ऊपर जाना है, फिर नीचे आके सोना है. दैट्स हाउ यू एक्लिमेटाइज योर बॉडी. तो आपको ये सब करना है. तो ये सब चीजें चैलेंजेस आएंगी. दैट्स व्हाई हिमालय इट टेक्स अ लॉट ऑफ विल पावर. यू मे बी वेरी गुड, यू मे बी एथलीट हियर, लेकिन उधर जाके अगर आपका विल पावर नहीं है तो हिमालयन ट्रेक्स आर डेफिनेटली, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. सो यू नीड ऑल दैट थिंग्स. एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आता है कि उसके बाद no matter how good you are, you have to push yourself. Yes. You feel, अरे यार, why am I? You will, like it has always happened in our group. You know, हम लोग सोचते हैं हम क्यों आ गए इधर. मतलब मुंबई में इतनी अच्छी बेड थे, हम क्यों नीचे सोने आ गए. हम 8 घंटे चल रहे हैं, पानी नहीं है. मतलब पानी तो रहता है, बट मतलब you don't eat every 3 hours, right? You don't have that kind of meals. You're taking all the hardships. You are taking all the hardships. And why are we here? But every time after the trek is complete, you're like, यार वापस जाते हैं, 5000 मीटर वापस करना है. So it is that kind of feeling. What's that motivation? I think it's everything, the experience that you get, the hardships that you get, the nature that you are in. So everything accounts. The group that you are with, that also matters a lot. अगर आपका बहुत ही अच्छा ग्रुप है, हर साल आप जाके एंजॉय भी कर रहे हो, चल भी रहे हो, एंड यू डन समथिंग गुड, you feel good internally ना, अरे वाह ये क्या मस्त ट्रैक किया मैंने. So then it inspires you for the next trek. कि भाई ये भी करते हैं. Then you keep hearing, so on the trek your guide says, अच्छा तुमने ये किया है ना, तुमने ये वाला ट्रैक किया है क्या. जैसे फॉर एग्जाम्पल पानपतिया का गाइड ऑल्सो डज गुप्तखाल. गुप्तखाल इज अ वेरी गुड ट्रैक. Now I have to do that. It's a part of my list. गुप्तखाल बहुत कम लोग करते हैं. It's a very nice trek again in Uttaranchal. Same region. हाँ, it's not same region but in Uttaranchal only. And again a very very nice trek. मतलब a tough hard trek, a tough hard high altitude trek in the lines of Panpatya and maybe even more. Ordon से भी ज्यादा और पानपतिया से भी ज्यादा बोलते हैं गुप्तकाल टफ है. But it's a nice trek. So वो करना है. कालिंदी खाल है, कब से करना है, उसकी अलग प्रिपरेशन होती है पूरी की पूरी. Because उसमें there are regions where you get avalanches, so you have to go with a satellite phone compulsory कर दिया है. उसका प्रिपरेशन और प्लानिंग पूरी अलग होगी. So it's a avalanche prone वाला zone. बहुत लोग, there have been incidents, people have died in that. So every trek has its own limitations, but yeah, it keeps you in, you are, अच्छा मैंने ये किया है, तूने ये किया, अच्छा चल next time ना मैं ये वाला करूँगा. It's like that. Different people have different motives of trekking. हाँ. Some people just go out for the nature. हाँ. Some people want to have that urge of climbing higher and higher and higher. हाँ. तो हर एक का अपना अपना अलग अलग होता है. तो आपका क्या रीजन है? So for me, it is to be more, like I said, more than 5,000 meters, and B, it is to be something very few people do. I need my quiet and peace in the trek.
but also it has to be, it should be like very easy that everybody is doing. I need some hardships also in the trek. It should be interesting. थोड़ा challenging थोड़ा भी challenge भी हो, हाँ, और थोड़ा ऑफबीट हो, लोग ज्यादा जाते नहीं हो, बट ऐसे भी नहीं है कि कोई नहीं गया है, ऐसे नए ट्रैक्स मैंने कुछ भी नहीं किए हैं, लोग गए हैं, इसलिए मुझे पता है कि ये रूट है. finding a new route. हाँ, yeah. So I'm not into finding a new route. It has to be there. So like coming back to the mental preparation, हाँ, like have you ever faced any difficulties on the trek? lot of times. मतलब अभी ऐसा point आ गया है कि you feel like you want to return back. So there have been a lot of times like this, and I have taken that call and I have returned back. The first time we did the Baralachala trek, we were 3 of us and only one guide porter. Okay, 4 of us only. Out of the 3 of us, 2 of my friends fell ill, and even the guide was not feeling too confident. Even he was having, he had just come. He was a Nepali guide. He had just come back from Nepal to Manali. So though he had done that trek a lot of times, but that time he was not very physically fit. So on our second day of trek, after we went ahead from Chandratal, first day that time was, because this is an old 2009 thing. So we used to walk from Batal to Chandratal 14 kilometers. Now you have the jeeps going, but we used to walk that. And Chandratal has a zone wherein, you know, a lot of people do suffer AMS. I don't know what air pocket it has or what it has, but a lot of people do suffer AMS in Batal and Chandratal. When the second day we were going for Chandratal, midway only, my friend started experiencing difficulties in breathing, walking and everything. Even though he used to sit, he was not able to, you know, his breathing was not coming to normal. Even without the load, he was not able to walk in a straight line. So we knew something is wrong, it's not right. And at the right time, we met a Bakriwala also there. His settlement was a little down. So we said we will abort the trek for now. We will go down and we will see what next decision will happen after that. So we moved down. We stayed at his place. He gave us food. Then of course he gave us some jaggery. So I don't know how the jaggery worked the magic, but jaggery, apparently the goat person said that it's very good for fever. So he gave us little jaggery. My friend relaxed the whole night. We relaxed. The next morning he was good. Well, nothing happened. But we decided that this will because 3 out of 4 people are not feeling too well. Let's go down. And so we aborted that trek. Then we did a trip instead, and I had my backup plan ready. So we did a trip in Kaza, Spiti side. So we went all the way, we covered Kaza, then the old Dhanskar monastery, then a lot of area in that. But we did a trip instead of a trek. So we had to come back to this trek. We can't really let this trek go, right? So after 10 years or something, 8 or 10 years, came back to this trek with a bigger group, with a better planning, you know, with the extra halts in Batal for acclimatization and everything. In spite of all the preparation and everything, out of the 8 team, only 4 people team could finish the trek. 4 people returned right from Chandratal again. One of them had AMS. Second was not too strong, and so the same way, you know, 2 of them were not too strong. And third friend, what he did was, one friend didn't have a very good sleeping bag. He realized that his sleeping bag is not working fine. So one of the friends gave his sleeping bag and he returned. So 4 of these people returned and 4 of us continued. And out of those 4, 2 were the people who had aborted the trek earlier. So me and my friend. So we decided, no, we will do this time. Thankfully, we finished that trek. But again, like I said, no, this Batal Chandratal air pocket affected, in spite of one extra day in Batal acclimatizing, we still had problems, and we had also spent one day in Manali acclimatizing, going on a local hike. So we kept enough days acclimatizing before we actually started the trek, but yet pocket no, there are air pockets sometimes. There are places where the air is relatively much thinner and it's much difficult to acclimatize. But आजकल तो चंद्रताल कितने सारे लोग जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, बट अब तो गाड़ी से जाते हैं ना, बट वो ट्रैक नहीं करते ना, वो मेन ट्रैक तो उसके बाद ही शुरू होता है. चंद्रताल तक तो किसी को भी नहीं हो रहा था. चंद्रताल के बाद का जो फर्स्ट डे है ना, देयर, हाँ, द फर्स्ट डे ऑफ द चंद्रताल में ऑल्सो, इवन इन चंद्रताल डे वी कुड सी द साइंस, सो दैट्स व्हाई वी डिडंट लेट देम कंटिन्यू, वी सेंड देम बैक फ्रॉम चंद्रताल. अच्छा, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रिटर्न बैक? I think if your group are all on the same page,
then it helps. If there is even one person who says, no, I'm not returning, then it can become a challenge. But if your group knows, somebody is having a difficulty, we have to return back, this is the reason. So when in commercial treks, what happens is the guide and the leader is the ultimate. He tells you have to return, you have to return. No arguments over there. But when you go in places like these, with friends on our own, you've hired your guide. So that time also we do consult the guide. But like I said, sometimes the guide is also scared because he doesn't know you. So he will not push you for a trek. So he'll say, yeah, confident, like, chalo, main leke chalta. So, but taking that call is very important. Sometimes we do a lot of things, like, we always keep an oximeter with us. We always take oxygen readings. So sometimes knowing our body also helps. And that's why I don't like taking new people who really don't know how to respond to. Like, all of us who've been in the mountains know we have, headaches. Sometimes even vomiting. Sometimes there are people who know that they can't eat, or they'll eat a particular thing only. Like, I had this friend, I used to carry Parle-G for him because he only used to have Parle-G. Anything else, he used to feel nauseous. So he used to eat, but he didn't like anything that was gooey. So nothing like upma would not work for him. You need some poha or something which is not, So there was like a packet of Parle-G only for him. Every morning his Parle-G was fixed. ये Parle-G ही खाएगा, बाकी जो भी नाश्ता खा ले, but ये Parle-G ही खाएगा. And sometimes even when you are like the strongest in your group, I know of this friend who's done his advance and everything, but in the Charangati trek he got AMS issues. So he was vomiting, he was doing everything, and now the decision comes. The thing is, he can't eat food because now once the vomiting starts, the food doesn't go easily. Okay, that is a cycle. So somehow. Yeah, right. So now what to do? We're trying him to, eat. Even if you're throwing up, just eat. So we were giving him anything that he likes, like dates khale, ye khale, wo khale, whatever goes in easily, please eat that. But now the thing is that trek that we did, this Charangati Parikrama wala trek, the trail was not very good, frankly. So it had a lot of moraine and a slippery moraine. And now when this friend fell sick, we were just below the pass. Now it is a decision of finishing the pass and going to Chitkul one day, or going back 3 days on that area which you are not confident of. You don't want to do that again. So we had a big meeting between all 5 of us, what to do. So this friend who was not well, he's done even search and rescue also. So he's done all his courses. He knows his body well. And so he decided that he will go, because as soon as he goes down from the pass, he'll be fine. Now the challenge is to do that 500 meters of the pass that we want to do. I think that day we had some 500 or 700 meters of gain. And then the descent. So then we decided we will proceed. We will not go back. His weight was distributed amongst us, amongst the porters also, because now everything is empty. It was a 5-6 day trek. अब तो राशन तो गया है, खाली हो गया है, तो थोड़ा उनको दे दिया. तो we kept him without the bag and one person with him at all times. That was the call that the group took. And we did somehow manage to do that thing. We reached the pass. The moment this guy descended the pass, he started running faster than us. A, he was without the bag, and B, his AMS was sorted. So reaching the pass was difficult. He was still ahead because he was without the bag and he was managing fine with the thing. He had a lot of headache and vomiting also. So all the signs of AMS. But we took that risk, I would say. And thankfully after the pass, everything was over. It was good. With this example, मेरे दिमाग में जो अभी आ रहा है, that is how important the teamwork is. Yes, it is. And that's why the size of team also matters. 3 to 5-6 member team is a good team size. जब भी हम लोग commercial group के साथ जाएंगे तो अलग बात हो जाती है. But if you are going on your own, तो staying together as a team matters a lot. Definitely. And फिर उसके बाद जैसे ऐसे जब कोई difficult times आते हैं, कोई difficult situation आती है, when you have to come together and take a decision
कि आगे जाना है या नहीं जाना है, उस टाइम पे वो टीम बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बहुत so that's why Himalayan treks I prefer only with my close group who I have experience with. एक वो होता है एंड देन सेकेंडली वो तो होता ही होता है, बट उसके बावजूद भी समटाइम्स यू नो योर फ्रेंड्स इन एंड आउट एंड यू नो कब वो मतलब कब उसकी लाइन है, ये लिमिट है, ये लाइन है, हाँ। सो यू नो सबका प्लसेस माइनसेस, देन यू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। नए ग्रुप में वो नहीं हो पाता है, दैट्स व्हाई द टीम ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क भी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट एक पर्सन का अगर आपको कैरेक्टर समझना है ना, आप उसको हिमालय में बराबर से जज कर सकते हो। उसको अच्छे से 4-5 दिन के हिमालयन हाई ट्रैक के लिए लेके जाओ, हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक के लिए, एंड यू विल बी एबल टू जज अ पर्सन। तो कंपैटिबिलिटी भी जज हो जाती है इस तरह से, इफ आई वुड से। नहीं, ऑफ कोर्स, बिकॉज यू सी, आप नॉर्मल केस में यू कैन नॉर्मल एवरीथिंग इज राइट, सब कुछ सही है, तो आप एक डिफरेंट इंडिविजुअल होते हो, गुड मूड, ये वो, एवरीथिंग इज गुड। द मोमेंट एडवर्सेस come in, bad weather, bad headache, bad you can't do anything, because of course it is very tiring। आप पूरे दिन थके हुए आए हो, अब कोई किसी को बोलो चलो कुक करके आपके लिए दे दे, वैसे तो आप घर पे होगे तो सब लोग चाय बना के दे देंगे, सब आपको खाना बना के दे देंगे, बट जब आप एक्चुअली माउंटेन्स में हो, आपका टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट है। एक ग्रुप टेंट पिच कर रहा है, एक जन खाना बना रहा है, भले हम सपोर्ट स्टाफ लेके जाते हैं, बट हम लोग कभी कुक वुक लेके नहीं गए। So the guide himself does a little bit of cooking, we help in it, we are cutting, we are doing a lot of things. So a lot of things happen कि भाई हम सब खुद ही कर रहे हैं, टेंट भी खुद ही लगा रहे हैं, because we are not taking that kind of commercial trip कि भाई अपना टेंट भी जा रहा है, घोड़े भी जा रहे हैं, ये भी जा रहा है, अलग से कुक मील, मतलब वो क्या बोलते हैं, फूड टेंट लग रहा है, वो सब सेटअप नहीं होता है, सब इधर खुद ही करना है, सब खुद से ही है। तो ये टीम वर्क बहुत ही इसमें समझ में आ जाता है इंसान का। And the major thing is the difference of opinions. Yes, बिल्कुल। वो तो मतलब अलग ही हो जाता है। हाँ, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, तो बोलते हैं नहीं चलो अभी वापस चलो। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा बोलते हैं नहीं हम तो ऊपर ही जाएंगे। नहीं, वैसी वाली टीम भी नहीं चाहिए भाई, बैलेंस वाली चाहिए जहाँ सब एक ही बोल रहे हैं। तो फिर जब ये आप डिसाइड करते हो अपने ग्रुप के साथ, तो डू यू हैव सच डिस्कशंस बिफोर स्टार्टिंग द ट्रैक की what should be our turning point or what should be our ऐसा कोई डिस्कशंस होता है? इनहेरेंटली ऐसा कभी हुआ नहीं है, मतलब ऐसे प्री डिस्कशन कभी नहीं हुआ है, बिकॉज वी ऑलवेज नोन, एंड इंडिविजुअल कॉल्स भी बहुत लिए हैं हमने, मतलब अलग सिचुएशंस में अलग कॉल्स। अच्छा। हाँ, देयर हैव बीन टाइम, मतलब बहुत ही ज्यादा अलग अलग एक्सपीरियंसेस बहुत ट्रैक्स पे हुए हैं। जैसे एक में तो हमें जिस दिन हमें पास क्रॉस करना था, उस दिन इतनी बारिश आ गई कि वो बॉम्बे जितनी बारिश हो गई थी। सो वी हैड टू अबॉर्ट इट वेयर वी वर, वी आर लाइक अब आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, कहीं नहीं जा सकते। तो हम लोग तारपोलिन लेके बैठे थे, गाइड को बोला पहले 1 घंटा रुकते हैं अगर ये बारिश कम होती है, बट वो बारिश कम होने का नाम ही नहीं दे रही थी। और मुंबई जितनी बारिश, आप इमेजिन नहीं करोगे, जितनी हेवी रेन्स मुंबई में जुलाई में आती हैं, उतनी हेवी रेन्स आप 4500 मीटर्स पे हो और उतनी बारिश हो रही है वहां पे। सो ऑल वी कुड डू इज वेट फॉर इट टू सबसाइड और मेक अ कैंप, अ टेम्पररी कैंप साइट। सो थैंकफुली जो गाइड थे एक्सपीरियंस थे, तो while we were waiting in this tarpaulin, because it didn't stop for even an hour, तो the pass plan तो got cancelled कि that day तो pass तो नहीं होगा। Then the guide went ahead to see a proper site where we can at least pinch some tents। तभी ऐसी टीम थी कि हमारे 3 टेंट्स लगते थे, बट वो टाइम पे हमने सिर्फ 2 ही टेंट्स लगाए थे। We pitched only for 2 tents। उतनी जगह मिली हमें, एक साइड स्नो ड्रॉप था, एक साइड पूरी एज की, so it was like उतना ही जगह था हमारे पास जो था। So somehow we did a emergency क्या बोलते हैं camping there because the weather went bad. So there are different situation calls for different हाँ, and the whole team has to be on the same page. वो बहुत ही ज़्यादा हाँ, बहुत ही important है। हाँ, इसके साथ ही which is something that is very important is rescue, क्योंकि जो एडवर्स सिचुएशंस आ गए, ठीक है, जैसे अभी आपने बोला कि अचानक से इतना हेवी रेनफॉल हो गया कि अब आगे नहीं जा सकते। बट अभी अगर समझ लो और भी ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन आ गई वेयर द पर्सन कैन नॉट इवन रिटर्न बैक,
अटक गया वहाँ पे, हाँ, तो वहाँ पे उसको रेस्क्यू करवाना पड़ेगा, हाँ, राइट। तो मुझे रेस्क्यू के ऊपर भी बात करनी है आपसे, हाँ, तो बट उसके लिए हम लोग नेक्स्ट एपिसोड पे बात करेंगे।